Now we will be talking about what I was telling you from the why I did this. We need to study second period. Pardon, ma'am. No, sorry. Okay, fine. This we have to. Now we have to go for meaning of revenue. Okay, means revenue is also from producer's point of view. Okay, but now the revenue means what the profit he is getting. Okay, that will be under revenue. So meaning of revenue, revenue is the money payment received from the sale of a commodity. If you are selling a thing, okay, if the producer is selling a thing, okay, then what is the money he is getting? Okay, how much money is the getting? That will be the revenue. The terms mostly used with revenue are total revenue, average revenue, marginal revenue, etc. Okay, so types of revenue is total revenue, average revenue, marginal revenue. Now, Okay. total revenue is defined as the total or aggregate proceeds to the firm from the sale of a commodity. If you are selling a product, then whatever the money you are getting, that is your total revenue. It is calculated by multiplying price by the quantity sold. Obviously, if you are selling one good at 5 rupees, then your revenue will be 5 rupees, 5 into 1. So P is for price, Q is for quantity. For example, if a firm sells 5 shares at the price of 100 per share, the total revenue would be 5 into 100, that is 500. Symbolically, TR is equals to price into quantity, where P is equals to price and Q is equals to quantity sold. Now comes Okay. average revenue. Average revenue is TR minus TR upon quantity, number of units sold. Okay? So average revenue is per unit of output sold. It is obtained by dividing total revenue by the number of units sold. For example, if TR of a firm from sale of 5 share is 500, then average revenue would be 100. Okay? You can Yes. also say that average revenue is equals to price, because TR is equals to price into quantity, and average revenue equals to TR upon quantity. So we have up in place of TR, if you replace TR, it would be price into quantity, and denominator also you have quantity. So if you cancel Q, you will be left with P. So AR is equals to P. This they have shown here as well. Okay, ma'am. Okay? AR is also Yes. called price. Okay? Thus AR is always identical with the price. Now it's marginal Yes. revenue. Marginal revenue is addition made to the total revenue when more unit of output is sold. It means TRN minus TRN minus 1. Okay? Means if you sell one extra unit, what is the difference between both two units you are getting? That would be termed as marginal revenue. For example, if a firm earns a total revenue of 500 by selling 5 shares and 520 by selling 6 shares, then a marginal revenue would be 20, which is the addition to the TR by selling an additional unit of 6 unit or the output. Okay? Mm-hmm. Symbolically, MR is equals to change in total revenue, change in quantity sold. MR is equals to TR, change in TR upon change in quantity, where change in TR upon change, where change is equals to change in quantity sold. Also, MRN is equals to TRN minus TRN minus 1. That is, MR is the addition to the TR of the firm when it sells nth unit of the product instead of N minus 1 unit. Okay? These relations are same, like MR and TR and AR, na? The same relation we have for TC, MC and TVC, TFC. Okay? Mm-hmm. Now, okay. Now we have relationship between TR, AR and MR. Okay? What is the relationship between TR, AR and MR?
we have different kinds of competition: perfect competition, monopoly, monopolistic, and all and all. Okay. First, we will be talking Okay. about perfect competition. What is the how what is the relation between these three when we have a perfect competition? So there is a close relationship among the three concepts of revenue: TR, AR, and MR. AR and MR values are calculated from TR values. Okay. इन परफेक्ट कंपटीशन फर्म इज अ प्राइस टेकर. प्राइस टेकर का मतलब ये होता है कि जो इकोनॉमी में बायर्स और सेलर्स ने एक प्राइस डिसाइड कर दिया, उसी चीज पे वो चीज बिकेगी. या फिर अगर गवर्नमेंट का कोई नोटिफिकेशन आया तो आपको उसी रेट पे उस सामान को बेचना है. ठीक है. प्राइस टेकर होता है वो, अपना प्राइस डिसाइड नहीं कर सकता. सिंपल सी कहानी. ठीक है. There are so many buyers and sellers that no individual buyer or seller can influence the price of the commodity. क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में इतने सारे बायर्स और सेलर्स होते हैं, जिस उसी के कारण एक बायर या एक सेलर प्राइस को इधर उधर नहीं कर सकता. ठीक है. एक एग्जांपल देती हूँ. लेट अस सपोज कि मैं एक सेलर हूँ. ठीक है. परफेक्ट कंपटीशन का सेलर हूँ. मान लो कि एक बॉटल है. उस बॉटल की जो कॉस्ट है वो 100 रुपीज है. ये हमारा चल रहा है मार्केट में. ठीक है. रेट. अब मेरे पास कोई आएगा उस बॉटल को खरीदने के लिए, तो ऑब्वियसली आई शुड गिव दैट बॉटल इन 100 रुपीज. ठीक है. लेकिन आई थॉट कि वाई टू गिव दैट बॉटल इन 100 रुपीज, लेट्स मेक प्रॉफिट एंड स्टार्ट गिविंग द बॉटल इन 99 रुपीज. ठीक है. तो Okay. ऑब्वियसली मेरा सेल्स बढ़ जाएगा. बिकॉज जो मेरे बगल वाला जो सेलर है वो तो 100 रुपीज में वही बॉटल दे रहा है. तो कस्टमर्स क्या होंगे, उसके कस्टमर्स भी मेरे पास आ जाएंगे कि आप तो 99 में ही दे रहे हो, आप मुझे दे दो. सिंपल सी कहानी है. जहां चीजों लोग को चीजें सस्ती मिलेंगी वहां चले जाएंगे. वो बेच तो देगा, मैं बेच तो दूंगी 99 रुपीज में, लेकिन वो जो 1 रुपए का लॉस है वो बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा. गेटिंग इट? Uh-huh. पहली चीज. सेकेंड केस, मान लो मैं उस बॉटल को 101 रुपीज में बेचती हूँ, तो क्या होगा, बगल वाला जो दुकान वाला है उसको तो 100 रुपए में ही बेच रहा है, तो सारे मेरे भी जो बायर्स होंगे वो भी उठ के उसके पास चले जाएंगे, तो मेरा फिर से लॉस हो गया. मुझे एग्जाम्पल इसलिए देना था टू मेक यू अवेयर कि ना ही मैं प्राइस बढ़ा के ना ही मैं प्राइस घटा के मार्केट में रह सकती हूँ. अगर मुझे परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट में रहना है, तो जो इकोनॉमी में प्राइस चल रही है उस प्रोडक्ट की, मुझे उसी प्रोडक्ट को उसी प्राइस पे बेचना है. दैट इज वाई अंडर परफेक्ट कंपटीशन द सेलर इज टर्म्ड एज, या फिर द फर्म इज टर्म्ड एज प्राइस टेकर. मतलब प्राइस लेता है वो मार्केट से. ठीक है. Okay. ठीक है. नाउ any variation in the output supplied by a single firm will not affect the total output of the industry. That is, to an individual producer the price of the commodity is given. He can sell, ये सेम चीज लिखी हुई जो मैंने आपको समझाया अभी. He can sell whatever output he produces at a given price. In other words, an individual seller is a price taker. Similarly, no individual buyer can influence the price of the commodity by his decision to vary the amount that he would like to buy. That is, the price of the commodity is given to the buyer. He is a price taker having no bargaining power in the market. The price is determined by industry at the point of intersection of market demand and supply curves. Some price and quantity values. ठीक है. TR, AR, MR values can be calculated by using the formula as given below. They are numerically derived in table below. ठीक है. Would you Okay. please mind reading this? The table shows. Table shows the value of TR are increasing at the same rate because of the initial unit of commodity sold at a price of 10 rupees. AR values are constant at rupees 10 at all level outputs. The AR values uh, coincide with the price value, that is IR is equals to P. The price value gives the demand curve D facing a firm. Thus AR is equals to P is equals to D. MR values also remain the same at rupees 10 because TR increases at the same rate. Thus MR values coincide with the AR value such that P is equals to D is equals to AR is equals to MR. Graphical representation of TR, AR and MR curves and a perfect completion is shown. Yeah, you read this, then I'll explain. Then we'll wrap up because in next class I'll prefer. From next class I'll go with under monopoly and monopolistic competition. MR
Um, in the figure, yeah, TR curves a straight positively sloping line from the origin. TR increases in the same proportion in the as increase in output. So AR curve is a horizontal line parallel to the x-axis. It starts from a fixed intercept on the y-axis, which is equal to the price value. It coincides with the price line or the demand curve. That is, AR is equals to P is equals to D. MR curve is also a horizontal line parallel to the x-axis because AR is constant. MR curve coincides with the AR curve such that P is equals to D is equals to AR is equals to MR. Full stop. You just read that, you didn't understand. ठीक है, तो देखो इस शेड्यूल में क्या बना हुआ है, नंबर ऑफ यूनिट्स दिए हुए हैं, प्राइस दिया हुआ है, टीआर दिया हुआ है। टीआर कैसे करते हैं कैलकुलेट, प्राइस इनटू क्वांटिटी करके। तो प्राइस मेरा 10 था, क्वांटिटी 1 थी तो 10 आया। सेकेंड यूनिट में प्राइस मेरा 10 था, क्वांटिटी मेरी 2 थी तो 20 आया। थर्ड यूनिट में 10 था, क्वांटिटी 3 थी तो 30 आया, एंड सो ऑन। ठीक है, ये टीआर की कहानी होगी। व्हेन वी टॉक अबाउट एआर, AR I have told you it's TR upon quantity. So TR we have 10, quantity is 1. So first is 10. For second unit, TR is 20 upon 2. That will give me again 10. If you see that the price line and the TR line is same, means AR is equals to price. ठीक है? When we talk Mm-hmm. about MR, MR is change in TR upon change in Q. So if we see for TR change 10 to 20 हो गया, तो मीन्स 10 ऊपर और क्वांटिटी वुड बी 2 minus 1 would be 1. So obviously 10 upon 1 would be 10. Again with it's 20 to 30 हो गया तो 10 का डिफरेंस आ गया, क्वांटिटी भी 2 से 3 होगी तो 1 आया, तो 10 upon 1. So that is why MR is also 10. ठीक है, ठीक है, Okay. दिस इज द वे यू नीड टू कैलकुलेट द TR MR एंड ऑल। ठीक है, Yeah. दिस इज ऑल दे हैव एक्सप्लेन्ड इन दिस। ठीक है, अब ग्राफिकली कैसे करते हैं, तो मैंने आपको बताया ना कि अगर आप देखोगे शेड्यूल के हिसाब से तो प्राइस, AR और MR तीनों चीज सेम है ना, दस Mm-hmm. दस 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 दस। ठीक है, तो इसको रेवेन्यू वाले, इधर रेवेन्यू इधर क्वांटिटी, मेजॉरिटी हम क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे लेते हैं, रेवेन्यू या कॉस्ट वाई एक्सिस पे लेते हैं। ठीक है, तो Mm-hmm. जब मुझे प्राइस लाइन या AR लाइन या MR लाइन निकालनी थी, तब मैंने क्या किया कि ऑब्वियसली मेरा कांस्टेंट है वो 10 फॉर एनी नंबर ऑफ आउटपुट, तो मैंने 10 पे एक लाइन खींच दी, लाइक पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कि वॉट एवर बी दी क्वांटिटी, माई रेवेन्यू वुड बी 10 ओनली। ठीक है, Mm-hmm. व्हेन आई टॉक अबाउट TR, तो TR में क्या हुआ, जैसे जैसे मेरा प्राइस था उसके हिसाब से मेरा TR बढ़ता चला गया, तो वो स्ट्रेट लाइन हो गया फ्रॉम ओरिजिन टू टॉप, खत्म। ओके, Okay. सो नाउ अगर आप फिगर का वो देखो, तो आउटपुट मेजर्ड ऑन द एक्स एक्सिस, क्वांटिटी आउटपुट, ठीक है, एंड रेवेन्यू ऑन वाई एक्सिस। जब हम कॉस्ट वाला लगाते थे तो हमारा जो रेवेन्यू था वो हमारा वाई एक्सिस पे होता था, हमारा कॉस्ट जो था वो हमारा वाई एक्सिस पे होता था, रेवेन्यू वाले केस में हमारा रेवेन्यू वाई एक्सिस पे। अब रिलेशनशिप तीनों में, TR कर्व जो होता है स्ट्रेट पॉजिटिवली स्लोप लाइन फ्रॉम ओरिजिन होता है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एंड गो टिल द टाइम इट हैज बीन टोल्ड टू डू। ठीक है, उसके बाद TR increases in the same proportion as increase in output sold। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे TR भी हमारा बढ़ता चला जाएगा। 10 पे 10 था, नेक्स्ट पे नेक्स्ट था, एंड ऑल। ठीक है, उसके बाद Mm-hmm. फाइन, उसके बाद ठीक है, उसके बाद हाँ, AR कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। AR कर्व जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल में है। ठीक है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम फिक्स्ड इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्वल टू प्राइस वैल्यू 10। ठीक है, इट
coincides with the price line or the demand curve, AR is equals to P is equals to D. खत्म. मतलब जो एक छोटा सा जो गैप है, जो 10 का उन्होंने बोला ना, कि एक फिक्स्ड इंटरसेप्ट, तो यहाँ पे इंटरसेप्ट हमारा 10 है, तो 10 पे हमने एक लाइन बना दी जो हमारा पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और कोइंसाइड मतलब एक लाइन के अंदर दूसरा लाइन कोइंसाइड कर रहा है, विच इज इक्वल टू AR इज इक्वल्स टू प्राइस इज इक्वल्स टू D. ठीक है. उसके बाद MR कर्व इज ऑल्सो हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ठीक है. हॉरिजॉन्टल लाइन, Okay. हॉरिजॉन्टल लाइन होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ठीक है. और जो Uh-huh. कोइंसाइड हो गया मींस P डिमांड कर्व इज इक्वल्स टू AR MR. ठीक है. खत्म. दैट्स इट. वी आर डन विद इट. ठीक है. Okay. ट्राई की ये कर्व्स याद कर लेना टुडे इटसेल्फ. डोंट पोस्टपोन इट फॉर Okay. टुमारो प्लीज. डोंट पोस्टपोन, अदरवाइज इट विल बी लाइक लॉस फॉर यू. ठीक है. Okay. चलो. ठीक है. So fine, we'll meet. I don't know when we'll meet. We'll meet in the next class. Okay. It's better to say Bye, that. ma'am. Yeah. Yeah. Take care. Bye bye. Bye. Bye.